Hi, my name is Chirag, and here are the brands that I've worked for in my 15-year corporate career. I'm very happy and proud of कि यार मैंने इतने बड़े brands के साथ काम किया एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इतना अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने का वेयर आई ग्रू थ्रू माई करियर. लेकिन इट नेवर स्टार्टेड लाइक दैट. देयर वाज अ पॉइंट इन माई जर्नी अर्ली अहेड वेयर लोगों को लगता नहीं था कि मेरी जिंदगी में कुछ मैं कर पाऊंगा. एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. ये मेरी क्लास 12 की मार्कशीट है. इट विल कम अप ऑन योर स्क्रीन एज वेल. एंड इफ यू कैन सी मेरे इकोनॉमिक्स में 49 मार्क्स आए थे क्लास 12 में. मैथ्स 39 एंड अकाउंट्स 33. मतलब आई barely passed. एंड हियर इज द किकर. माय पेरेंट्स वो बोथ टीचर्स. तो इतने अच्छे नंबर लाने के बाद जितनी मेरी पिटाई हुई थी आई कांट इवन टेल यू. एंड आई कैन ओनली इमेजिन पुअर थिंग्स. दे मस्ट हैव बीन सो स्कैर्ड एंड टेंस की इसका क्या होगा. आई लैंडेड एट अ डिसेंट कॉलेज इन हंसराज बिकॉज आई वॉज एन एक्सेप्शनली गुड स्पोर्ट्समैन एंड आई वॉज द स्पोर्ट्स हेड बॉय ऑफ माई स्कूल. आई हैड प्लेड फॉर दिल्ली बास्केटबॉल टीम फॉर अबाउट 17 टाइम्स. सो आई न्यू कि मेरे को कॉलेज तो अच्छा मिल जाएगा, बट मैं barely पास किया था. एंड लिटिल डिड anybody know that things are not going to improve because ये मेरी marksheet है from my college and I had got a grand total of 569 out of 1200. So you can only imagine how stressed my parents were, how stressed everybody was. और जितने मेरे को ताने लोगों से मिलते थे कि यार तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में. और मेरे को भी विश्वास हो गया था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में एंड नंबर ही सब कुछ होते हैं. बट दैट इज नॉट द केस. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज, प्लीज लेट मी टेल यू दैट योर मार्क्स आर नॉट गोइंग टू डिफाइन हु यू एंड अप बिकमिंग इन योर फ्यूचर. स्पेशली राइट नाउ where people are giving more emphasis to skills. There are more young millionaires than ever before in India and globally. And if you're a parent, the same message goes to you that while marks are important, I get it, they probably make life much easier, the journey much easier to be able to get to your goals, but they are not the only thing. Our present does not define our future. Our actions do. So it is imperative that you know this कि यार मार्क्स ऊपर नीचे हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, जब आप अपना नीश फाइंड कर लोगे कि हाँ मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ, एंड व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट देयर, 100% you will get what you want to get. I got there. I had the opportunity to work for all these brands. अगर उन्होंने नंबर मेरे देखे होते तो कोई मेरे को कभी जिंदगी में हायर ही नहीं करता. But the fun part is nobody has ever asked me कि किसी के नंबर कहाँ आए थे. Genuinely मेरे को लगता है अगर किसी ने जाके मेरी हिस्ट्री पढ़ ली होती तो मेरे को कभी जॉब मिलती ही नहीं. But वो सारी जॉब्स मेरे को कैसे मिली? I had only needed a start, which I got with the India Today group. And there was a person who had sent my resume. They judged me when I gave the interview. They judged me for my interview skills. Then they asked me what I had done, and it's not one thing I'd go back to and say that I did well in my MBA, because finally मेरे को फोकस आ गया था कि यार अगर मैंने MBA में भी प्रॉब्लम कर दी ना तो फिर लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी. लेकिन MBA तक जब तक मैं पहुंचा था तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को मार्केटिंग करने में मजा आ रहा था. दैट एंटायर एंगल ऑफ हाउ टू बिल्ड ब्रांड्स, हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस, हाउ टू एडवर्टाइज, ऑल दीज थिंग्स were very intriguing for me and automatically मेरा interest था. So I started doing well and उसके बारे में वो ज्यादा जानना चाहते थे because fine, I understand marks are good, but मैंने सीखा क्या है, मैं उनका काम कैसे करूंगा, those things were more important. And since I was able to highlight those in my interviews, I was pretty much able to work for all the brands that I ever wanted to work for. Like I said, I will reiterate, marks are important. भाई प्लीज पढ़ लो अगर तुम पढ़ सकते हो और तुम्हारा इंटरेस्ट है, पर अगर नहीं है ना तो इतना ज्यादा लोड लेने की या फाइट करने की जरूरत नहीं है. The skill set that I believe is the game changer. You need to invest in people. The reason why I say this is आपको हायर एक इंसान करता है, आप एक टीम में काम करते हो जहाँ पे और लोग काम करते हैं. आपको जब काम करना होता है आपको लोगों से काम करवाना होता है, and whether that is internally or externally. So if your people skills are in place, you will be able to do a great job. And that's exactly what happened with me. I always believed that I was good with people. I was able to get along with people. I was able to understand how to get work done. And also it is not never a one-way strategy. It is always a give and take relationship. I was able to do well. And because of that, I was able to work for my dream company, which was BMW. And mind you, when I joined BMW, मेरे पास ऑटोमोटिव का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. आई हैड नेवर एवर वर्कड इन ऑटोमोटिव. एंड मेनी टाइम्स जब आप कोई ब्रांड ज्वाइन करते हो वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है. मेरे पास नहीं था. डिड लक प्ले अ फैक्टर? यस, बट
What also played a factor was that I had developed great relations and great connections during each and every job of mine. जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू करी थी तब मेरे को एक कॉलीग मिला था जो बाद में जाके BMW इंडिया के लिए काम कर रहा था, एंड ही रेकमेंडेड or forwarded my resume to the hiring manager, and then I got an interview and I was able to showcase कि मैं क्या कर सकता हूँ. And मेरे को नहीं समझ में आता था यार, मेरे को नहीं लगता था, मेरे को इतनी inferiority complex भी होता था जब मैंने वो ज्वाइन करी. यार इन सबको सब कुछ पता है बिजनेस के बारे में, I am just starting to learn, but then I realized कि यार कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं. अब जो नहीं आता वो नहीं आता, उसको मैं कवर कैसे करूंगा, वो मेरे को सीखना ही पड़ेगा. एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू fight it, I was like, हाँ यार नहीं आता, can you explain, can you tell me this? And when you approach people like that, without that pretense, मैंने किसी से बात नहीं करनी, I'm not going to ask people, that doesn't work. When you go with a beginner's mindset, what happens is that people appreciate the fact कि हाँ यार ये clearly मेरे को बोल रहा है कि मेरे को ये चीज समझ में आती है, ये नहीं आती, can you please help me? And more often than not, people are ready to help you, especially if it is an organization. That person will help you, it is their job. We are a team at the end of the day. I think the game changer is that when you are able to connect with people and in general understand कि यार अच्छा आपके रोल में क्या challenges हैं, how would you do this differently, this is what I think. What happens is people start having discussions because एक तो आपका common goal है और common interest point है. उसके अंदर if you give the due respect to the person who is slightly ahead of you in the journey, it will always help you. So from being somebody who was struggling for marks and was barely doing well academically, to being someone who invested a lot in people, worked really hard, turned up with a good attitude, worked well with people. Within 1 year of no prior automotive experience, this is what I was able to go on and achieve. And here is a recommendation that my boss had given me, and it remains one of the biggest highlights of my career. Is it is commendable that with no prior experience in sales, he very quickly and proactively managed to develop a strong business perspective as well as mastered his sales function, achieving, here is the kicker, record sales for Mini India in 2017 and Q1 of 2018. Chirag also displayed outstanding leadership skills in guiding and steering dealers towards delivering targets as well as improving business processes, which also resulted in turnaround of critical dealer partners. I'm extremely proud of this because when I look back, when I was in class 12 and I was in college and I was struggling with the kind of marks that I was getting and nobody thought that I would account to anything. From there to achieving this for one of the most iconic brands, I did that, and I did that based on my people skills. I did that based on turning up every day with that attitude that I am going to learn something, I am going to do my best. So if you're caught somewhere where you don't think that there is light at the end of the tunnel, please remember, our present does not define our future. Our actions do. You can be successful by sheer hard work and having great people skills.